Finally, India has won the ODI series without having Virat, Rohit, and Jasprit Bumrah for this particular second ODI. And we have made it. And I think this is the great boost to the confidence of Indian team just before the ODI World Cup. And we are not winning it against some team. It is Australian, the mighty Australians, and we have done it. But India has won the match by 99 runs, and definitely it's a big win against Australia, who's actually like this is their squad, this is their playing 11 in the upcoming ODI World Cup as well. And I think defeating them on our home ground where the perfect situation जैसा कि आप पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, वहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारे टॉप प्लेयर्स नहीं भी खेल रहे हैं तो भी टीम डोमिनेट कर रही है. हाउ बिग ऑफ अ कॉन्फिडेंस इट इज फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन फैंस एज वेल. Definitely a very big boost because 99 runs. First of all, the margin of victory is very convincing. Could have been a little more had it not been for the wagging tail of Australia, which has been a bit of a problem with India quite a few times. But I still think full marks to how they batted, for how they bowled as well. In most of the parts, I think it was very convincing. Maybe not as much in the field. And you can argue that, okay, this was a side without Pat Cummins, Mitchell Starc, Glenn Maxwell. But again, the argument stands for India as well, because there is no Rohit Sharma, there's no Virat Kohli, there's no Jasprit Bumrah, there's no Kuldeep Yadav, no Hardik Pandya. So plenty of players, the first choice players who are going to play the World Cup, are missing from the Indian ranks as well. So I think a very convincing performance all in all. The manner in which, the kind of partnership that was built between Shreyas Iyer and Shubman Gill right from the start, I think when they were inserted to bat, 400 runs on the board is a lot of runs. And I think somewhere down the line, Australia kind of bogged themselves down under the scoreboard pressure, because, the kind of strokes a few of the batters, particularly Steve Smith, if you see, it was very uncharacteristic of him to, go for that kind of a stroke first up on the first ball. So I think losing those 2 wickets right at the start, credit to Prasidh Krishna for the manner in which he bowled, increasing a bit of a headache for the selectors for the future, because we know he is one of the players who the Indian player selectors have their eye upon. Unfortunate that he has had to sit out of due to injury for too long. But again, that start, and then Australia collapsing for around 50 runs and 6 wickets. From 89 to 3, they went down to 140 for 8 before the partnership in the lower order. So I think all in all, a very convincing performance. Ashwin 3 wickets, Jadeja 3 wickets, so spin coming into picture, couple of centuries, and the half centuries as well from KL Rahul and Suryakumar Yadav. You couldn't have asked for anything more than this in the game. डेफिनेटली. और जिस तरीके से आज परफॉर्मेंसेज आई हैं इंडिया टीम की, वो डेफिनेटली जैसे कि प्रत्यय ने कहा बहुत कन्विंसिंग है. एक बार मैच समरी की तरफ नजर डालते हैं कि आज के नंबर्स कैसे दिखाई पड़ रहे हैं इस मुकाबले के. सबसे पहले हम देख सकते हैं इंडिया ने बैटिंग करते हुए 399 रन्स का स्कोर खड़ा किया, 5 विकेट गंवाए, और हमने देखा एक बहुत ही शानदार एक पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, या फिर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी जो कि हमें श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने करके दिखाई. 105 रन श्रेयस अय्यर, आज हम बात कर ही रहे थे उनके कि क्या वाकई केएल राहुल ये जगह ले जाएंगे, श्रेयस अय्यर को कहीं और फिट करना पड़ेगा. बट देन नंबर 4 हमें पता है श्रेयस अय्यर इज द सोल्यूशन, और उन्होंने आज बखूबी लौट कर अपनी इंजरी से जो अपना फॉर्म दिखाया है वो आप सभी के सामने है. इसके अलावा शुभमन गिल हमें दिखाई दिया आज अपनी फॉर्म में, 104 रन उन्होंने स्कोर किए. वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें, कैमरून ग्रीन ने 2 विकेट लिए, जॉश हेजलवुड के नाम 1 विकेट रहा. काफी एक्सपेंसिव रहे कैमरून ग्रीन, लेकिन 2 विकेट उन्होंने लिए. वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब बारी आई तो बीच में बारिश का खलल रहा, इसलिए डीएलएस के चलते ये रिजल्ट आया है. लेकिन ऑल इन ऑल शॉन अबॉट ने 54 सबसे ज्यादा रन, और सेकंड मोस्ट डेविड वार्नर ने 53 रन बनाए, जहां अश्विन ने 3, जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम की, और ऑल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को 217 रन्स पर, जिसके साथ 99 रन से इंडिया ये मुकाबला जीत चुकी है. प्रति एक सवाल पूछना चाहूंगी, सिंस ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि बीइंग क्रिकेटर्स सब कंट्रीज की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, और वैसे ही क्रिकेटर्स अपने बचपन से खेलते आ रहे होते तो उनको डोमिनेट करना मालूम होता है. बट होलकर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, जो इनिशियली हम बात कर भी रहे थे कि बहुत ही फ्लैट ट्रैक है, यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है. ऐसे में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स वाकई उतने इनफेक्टिव दिखाई पड़े और इंडियन बॉलर्स उतने ही इफेक्टिव दिखाई पड़े. ये डिफरेंस कैसे आया? क्योंकि कहीं पर तो वो फाइट पुट अप लगती कि नहीं, वहां का जो बॉलिंग एंड है वो एक्चुअली कुछ कर पा रहा है, बिकॉज 399 रन इज टू मच टू आस्क फॉर. आपने 400 का स्कोर दे दिया है सामने वाली टीम को कि उसने आराम से आपके सामने आपकी बॉलिंग लाइनअप जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप को जा रही है, जो आपकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, ऑब्वियसली आप इसमें कहीं पर भी कुछ भी कोई भी सवाल नहीं छोड़ोगे, आप हर चीज का जवाब लेकर आओगे. ऐसे में आप 400 रन खा रहे हो, तो और इंडियन बॉलर्स ने वहीं उसका ठीक उलट करके दिखाया. तो वो डिफरेंस कहां पे आया है दोनों के बीच? मुझे लगता है एज आई सेड दैट वो जो स्कोरबोर्ड प्रेशर होता है, जब आप 400 रन का सामने पहाड़ होता है, जब आप उसको चेस करने जाते हो, तो एक ही तरीका होता है कि आपको क्या खेलना है. आप यू हैव टू प्ले स्लैम बैंग क्रिकेट.
and that is exactly what Australia looked to do. Warner, I think he got a half century. That was all right. But Matthew Short, Stephen Smith, Manas Labuschagne, all of them had to come to the party necessarily, because you're not going to chase down 400 first of all easily. And if you have to even think of doing something like that, सारे के सारे बल्लेबाजों को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और कुछ एक या दो को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, जैसा हमने अय्यर और गिल्स के साथ में देखा फ्रॉम द इंडियन रैंक्स. I think that is where they actually missed the trick, because scoreboard pressure is trying too hard, right at the start. Yes, of course, you have to. You're chasing at 8 runs and over, and you are chasing this in T20 cricket. This is peanuts. But when you are being asked to chase 8 runs and over for a length which is as long as 50 overs, then it's an entirely different ball game. And credit, of course, where it's due. I think Indian bowlers really bowled well, because correctly pointed out, I think Indore is one of the flattest tracks, and it is a ground which is historically known for big scores. A double century already the previous game. Even in the pre-match that we were discussing, India scored 385, which is almost close to 400, and it's a ground which is known for these kind of tracks, for these kind of scores. And why not? Because it's a fast outfield. The dimensions are very short as far as the field dimensions are concerned. Fast outfield, and the flattest of tracks. So of course it's a batting paradise. Indians really made complete use of that. Whether you talk about KL Rahul's innings, whether you see how Surya Kumar Yadav batted, looked in complete elements of his. So overall, Indians were able to utilize those conditions, exploit those conditions a lot better than the Australians. And scoreboard pressure, I think that was down to which they actually batted in the manner in which they batted. A couple of unpardonable issues as well. I think Warner, trying to do too many fancy things, trying to bat right-handed, and then the manner in which he was, dismissed leg before wicket. There was an edge. He failed to review that, and in the kind of form that he was in, had he taken the review, he would have survived. So and I was actually particularly surprised with the fact, because batters generally know when it was a big edge. By the way, we are not talking about not a faint one, because the ball clearly deflected once before hitting onto his pads. So I was actually surprised that he wasn't able to fathom that there was an edge. Mistakes like these, of course. And like I said, credit a lot of it to Ashwin and Jadeja, the manner in which they bowled, spinning back the clock in a way or two. Because like I even talked about in the pre-show, that this was a duo which really used to do very well in white ball cricket at one point in time. And now that they have, regrouped, they are again doing exactly what they were known to do for. So I think credit to them as well. 6 wickets between them. Turns, I was really surprised by the amount of turn they were able to manage. And perhaps that was down to the revs on the ball that they were giving. Australia did not really had that much of discipline, because straying down on the leg side and giving some half volleys on a ground which is as small as Indore, you're not really helping your cause. And specifically, when you run into someone like a Surya Kumar Yadav, in the kind of mood he was in, murderous mood, when he gets going, you really can't really stop him. So Cameron Green, Sean Abbott conceding runs aplenty. So I think bowling overall lacked discipline. India, on the other hand, were very precise with how they wanted to bowl, and they were, of course, helped by some questionable tactics, some questionable decisions, and some poor cricket by Australian batters. And if you look, one thing I'd say, it showed, in the partnership that you saw between Hazelwood and Abbott, they showed that it wasn't really that difficult. I mean, if your number 8, number 9 are doing that kind of a batting, adding a 70 odd between themselves, one of them getting a half century, then it is a message for the top order and for the middle order as well, that if you would have hung in there, maybe there were runs for the taking. There were definitely runs for the taking, which you completely left out. So I think that partnership, another partnership of that form, and you might as well have seen the game becoming a close one, because 70, 80 runs shaved off what Australia have lost by. And you can see that the game would have come to a lot closer margin. So I think Australia would be disappointed, because it was a very good batting track, which they really failed to capitalize upon. डेफिनेटली. और इसी के साथ एक बार बात करते हैं स्पेंसर जॉनसन की, जिन्होंने आज डेब्यू किया. इवन हम लोग बात भी कर रहे थे कि क्या ये वाकई सही ग्राउंड है उनके लिए डेब्यू करने का, क्योंकि अगर मैं स्पेंसर जॉनसन होती तो शायद मैं मना कर देती, क्योंकि मेरा ड्रीम है, ठीक है, अपनी कंट्री के लिए क्रिकेट खेलना, बट आज नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस भी रहा है. अगर सिर्फ उनकी बात करें, स्पेंसर जॉनसन, उनको 8 ओवर्स खिलाए गए, 61 रन उन्होंने दिए, एक भी विकेट उनके नाम नहीं रहा. तो नॉट अ गुड डे, जो अपने डेब्यू की तरह वो याद करना चाहेंगे, बट उनके लिए डेफिनेटली वो एक आइकॉनिक डे है. बहुत उनका इम्पैक्ट माना जा रहा था प्रत्यय की स्पेंसर जॉनसन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है द 100 में डोमेस्टिक क्रिकेट में. सो डेफिनेटली ही इज अ बिग टैलेंट एंड डेफिनेटली ही इज. बट इंडिया में जिस तरीके से जिस कैंपेन का वो पार्ट होकर के आए हैं, बायलेटरल सीरीज वो खेल रहे हैं,
मुझे लगता है कि वो उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी एक छोटी सी चोट होगी, क्योंकि उनको भी लग रहा होगा कि उनको मैच जिताना है। डेब्यू करने का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, हर कोई चाहता है कि उसके डेब्यू पर उनकी कंट्री जरूर जीते, और आज उनके लिए डेफिनेटली एक काफी डिफिकल्ट डे रहा होगा, बट नॉट जस्ट फॉर हिम, सभी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट डे रहा। अगर हम एक्सपेंसिव होने की बात करें तो डेफिनेटली कैमरून ग्रीन, जो कि काफी क्रिकेट इंडिया में खेल चुके हैं, स्टिल 103 रन उन्होंने अपने अपने गेंद से दिए। वहीं 10 ओवर इसके अलावा हेजल शॉन अबॉट ने फेंके 91 रन उन्होंने लीक किए, 67 रन एडम जैम्पा ने लीक किए और हेजलवुड ने 62 रन लीक किए। और ये मैं बिल्कुल उनके बैटिंग का स्कोर नहीं बता रही हूँ, ये मैं उनके बॉलिंग का स्कोर बता रही हूँ जो उन्होंने अपने 10 ओवर्स में दिए हैं। और इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं इंडिया ने 400 रन जुटाए। लेकिन एक बात है, इसमें तारीफ बनती है इंडियन बैट्समैन की भी, क्योंकि पिच चाहे कितनी भी इजी क्यों ना हो, आपको हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ऑस्ट्रेलिया यू आर फेसिंग, और आपके पास आपके बड़े प्लेयर्स नहीं है। कुछ प्रेशर इंडिया टीम के ऊपर भी था, लेकिन कॉन्फिडेंस को जिस तरीके से जुटा के रखा केएल राहुल की कैप्टनसी में, जिस तरीके से टीम ने खेला और ट्रस्ट दिखाया अपने कैप्टन के लिए, वो बहुत ही शानदार था। हमने गिल की और अय्यर की तो बात करी ही, सूर्य कुमार यादव भी यहाँ पर बहुत तारीफ यहाँ पर वो गेन करते हैं। उन्होंने 6 छक्के 6 चौके लगाए, और जिस तरीके से अपने उन्होंने इनिंग्स पुटअप करी है 70, पता नहीं कि मुझे 70 का स्कोर बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है अगर कोई बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना पाया ना, तो भी अगर उसने 70 रन बना दी तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है। 50 से बड़ी बात मेरे लिए वहां पे वो हो जाती है, क्योंकि वो देख के लगता है कि उसने पक्का बहुत रन बनाए होंगे, बहुत ही अच्छे से बॉलर्स की धुलाई करी होगी, छक्के चौके लगाए होंगे, और कुछ कुछ वैसी इनिंग्स सूर्य कुमार यादव की देखने को मिली है। प्रत्येक मुझे लगता है बिल्कुल बच चुका है, सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं गेम में। ये वही मूवमेंट है जो हम लोग विटनेस कर रहे हैं कि सूर्या द ओडीआई बैटर का उदय हो चुका है। बट आपको क्या लगता है इस बारे में? बिल्कुल राशि, आई थिंक बहुत बात हुई है उनके ओडीआई फॉर्म को लेकर के, यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी माना है कि उनके ओडीआई के नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं है। 25-26 मैचेस खेलने के बाद अगर आपका एवरेज 25 से कम है, और अगर आप उस क्वालिटी के बल्लेबाज हैं जिस क्वालिटी के सूर्य कुमार यादव हैं, तो ऑफकोर्स वो नंबर्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बट आई थिंक द मैनर इन विच ही बैटेड टुडे, प्लेड इन द मैनर ओनली ही कैन प्ले, and the strokes that he played, 4 back-to-back sixes against his teammate at the Mumbai Indians, Cameron Green. I think that was a sensational assault, and I think he really helped, because credit to both of them, to KL Rahul as well as Surya Kumar Yadav, because there was a brief phase, overs 22 to 30 around, when Iyer and Gill were getting close to their century, जहाँ पे वो थोड़ा सा स्लो हो गए थे और थोड़े बाउंड्रीज वहां पे ड्राई अप हुई थी. इन दैट दैट काइंड ऑफ सक्ड आउट अ बिट ऑफ the momentum. So this partnership between Sky and KL Rahul, that injected the momentum back and kept India on course of getting to a 400. And had it not been for the few hits and misses, towards the fag end, because Australian bowlers in the death, they were really mixing and varying their pace, and they were trying to, because it was slightly a two-pace track. Because even towards the end of it, if you see, a lot of balls really kept low, and it was dripping as well. So there was purchase if you were taking the pace of the ball. There was purchase. So mixing those speeds meant that Suryakumar Yadav and KL Rahul missed out on a few balls. Had they connected that, they might as well have gone on to score probably even closer to 450, definitely 430 at least. So I think, but still, that partnership ensured that in between that 7-8 over period, when both of them, when Iyer and Gill were closing in on their centuries, whatever momentum India missed out on, that was completely rectified by this partnership. And see, previous game, the manner in which Suryakumar batted, putting aggression on one side and batting sensibly, and then showing today what he has done. See, this is something which we know Suryakumar Yadav can do. Of course, Right. today's innings, as a fan, you would enjoy that more. You would watch and cherish that more. But for me, the previous game's half century is over this one, because there we saw Suryakumar Yadav doing something that he is not known doing for, because he was eschewing his instincts. He was trying to curtail that instinct of playing those fancy shots. Today's innings was all glittery and sparkling with all those kind of things that we know Surya Kumar Yadav for. But the previous game, that would have given him the confidence that now in this game he can do what his natural game is. So Right. on any given day, Surya Kumar is a batter who can toy with the bowlers, no matter Right. the opposition, no matter the venue. He has the knack of playing those kind of strokes that very few have. But the innings Definitely. that he played in Mohali, the kind of confidence that would have given him, that reflected today. And I think there is nothing better than him coming into form right at this moment, because, of course, he's not the surest of starters in your World Cup 11, because there is so much competition. You don't want to be Even you we don't don't have want to place be for Surya. See the competition level. Absolutely. See, Rajsi, you don't want to be an Indian captain and selector at this point in time, क्योंकि हाँ, आपको right. आएगा ही नहीं समझ के आप किसको खिलाएं, because किशन ने रन्स बना लिए हैं, अय्यर ने आज शतक बना लिया है,
और केएल राहुल ऑलरेडी रन अच्छे कर रहे हैं जब से उनका कमबैक हुआ है, और अब सूर्य कुमार यादव जो एकमात्र शायद इजी अभी एक स्केपबोर्ड बने हुए थे कि इसे हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि इसके रन नहीं बन रहे हैं, उन्होंने भी आपको 2 मैचेस लगातार परफॉर्म करके दे दिए हैं। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी ऑफ कोर्स, और आप खिला अंत में 11 ही सकते हैं क्योंकि आप 15 कितने भी अच्छे फॉर्म में आपको खिलाने 11 ही हैं किसी भी गिवन डे पे। I think being an Indian selector, it's definitely not an easy task. But like I said, we always say it's a very cliche term, but it's a problem of plenty and it's a good headache to have. क्योंकि आप ये चाहेंगे कि वर्ल्ड कप के पहले आपके पास में ज्यादा फॉर्म प्लेयर्स होने चाहिए बजाय कम फॉर्म प्लेयर्स का, और आपके लिए चुनाव आसान नहीं हो तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम वुड डू हिज कॉन्फिडेंस अगेन अ वर्ल्ड ऑफ गुड। और एक और मैच है उसके बाद, ऑफ कोर्स यूजुअली हम देखते हैं कि जो तीसरा गेम होता है, अगर आपने 2 मैचेस जीत लिए हैं सीरीज में, तो तीसरे में आप शायद फ्रिंज प्लेयर्स को या बेंच को ट्राई करना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि फ्रिंज प्लेयर्स या शायद बेंच जो थी उसने आपको सीरीज जिता के दे दी है, और थर्ड मैच में आपके सारे मेन प्लेयर्स वापस आने वाले हैं। सो इस सीरीज में हम थोड़ी एक उल्टी थीम भी देख रहे हैं। सो आई एम बट आई स्टिल फील सूर्य कुमार यादव विल डेफिनेटली प्ले इन राजकोट। And another thing, Rajsi, being that Rajkot, much like Indore, is a belter. It's a venue which is known for a lot of runs. So I think that is another great game, which is another great opportunity for both. In fact, all of the middle order, Rahul, Kishan, Sky, KL, everyone, to again go out and get some runs under their belt before they go into the World Cup. Right. और इसी के साथ प्रत्यय, सिंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 को लेकर के भी, सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट भी आया, वुड लाइक टू पुट दैट कमेंट अप फॉर यू कि अगर हम इटसेल्फ अश्विन का परफॉर्मेंस आज का देखें तो हमें पता है कि हाउ गुड ऑफ अ प्लेयर इज ही। सो ये पूछना चाह रहे हैं कि डू यू थिंक अश्विन विल गेट अ प्लेस एट डब्ल्यूसी, बिकॉज हमने देखा है द वे ही हैज प्लेड टुडे एंड ही इज वेरी क्लेवर क्रिकेटर, आई वुड लाइक टू यूज दिस टर्म, बिकॉज ही डू नो कि भले चाहे वो पिच पे कुछ भी ऑफर करने को ना हो, बट स्टिल वो अपने लिए चीजें निकाल लेते हैं और उनको पता है कि उनको कैसे अपनी चतुराई से सामने वाले बल्लेबाज को चकमा देना है, और वो बखूबी दे लेते हैं। सो क्या ऐसे में अश्विन की पोजीशन को लेकर के वापस से एक चर्चा शुरू होगी, क्योंकि हमें पता है अक्षर पटेल इंजर्ड हैं, तो अभी भी एक छोटा सा वो स्पेस बाकी है, तो क्या हम वहां अश्विन को फिट होते हुए देख सकते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए इंडियन सिलेक्टर्स को? See, I think it will be difficult to slot him in the 11 unless, of course, there's an injury concern with Akshar Patel, as we said. उसके अलावा मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस मोमेंट पे उन्हें खिलाया गया है। डेफिनेटली दैट इज बिकॉज जगह खुली हुई है। रोहित शर्मा हैज आल्सो एडमिटेड दैट डोर्स आर नॉट रियली क्लोज्ड अपॉन एनीवन, एंड द फैक्ट दैट ही इज प्लेइंग, से फॉर इंस्टेंस युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन, you can clearly say that okay, these are not going to be on the World Cup bus for sure, because if you're not playing in the Australia series, clearly the doors are closed upon you. But if you are playing the series, definitely I feel that there's a outside chance that in case an injury occurs, in case there's a last moment sort of an emergency, then you can definitely turn your head towards players like Ashwin, Prasidh Krishna, and Mukesh Kumar, even, who has been included today. So those kind of players. As for Ashwin C, I think he is an absolute legend. Whenever you talk about cricket, he is someone who has done exceedingly well across all the formats. And in the previous game as well, he came right after a long break. He hasn't played the format too much of it in the recent past. Only a couple of ODIs in the last 4 or 5 years, if I'm not wrong. So to come back, previous game, I think, if I remember correctly, 1 for 47 his figures were. That was a game in which he just came back and kind of gauged and customized himself to the format. But today you saw 3 wickets. One of those, of course, he was lucky getting David Warner out, because that wasn't really a dismissal. It was Warner's fault that he chose not to review it. But apart from that, the carom ball that got Labuschagne out, or the wicket that he got of Inglis, those were brilliant wickets, and he would be very happy with that kind of performance. The kind of turn he got, the amount of variations he has, because he is a bowler who keeps on doing something or the other. He won't let you settle as a batter, because all the time there's something which he's trying to do. Either he would play with the trajectories, or he would vary his his pace. He has some variations. He has a flipper, he has a carom ball, of course the stalk of spin, varying the pace, or using the pitch or the crease in different manners, trying to. So he is someone who keeps on experimenting. Whenever you have someone like him in your side, he is definitely going to be an asset. And of course, he has 4 centuries in Test format, so and some runs in ODI cricket as well. So you know that he's not a mug with the bat. So if it comes down to a situation that he has to bat, so maybe at your number 8 position, maybe at your number 9 position, he is someone who can hang around a little bit and score a few runs as well.
So all in all, he's a very good package to have. And yeah, I would definitely not mind him having inside my World Cup 11. But like I said, see, you're spoiled for choices because there are so many that it's really, really hard to, and inculcate everyone into that 11. So yes, if you ask me whether I want Ashwin inside the squad, absolutely 100% yes. But do I think India would be able to do that? I'm not really entirely sure. Right. It would be really difficult to really slip in players like this because अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें हम यूटिलाइज करना चाहेंगे बट वी सिंपली कैन नॉट. एक और इंटरेस्टिंग कमेंट है, वुड लाइक टू शो यू दैट एज वेल बिकॉज जिस तरीके से हमने इस पिच को देखा है और होलकर स्टेडियम के इसके अलावा नेक्स्ट जो राजकोट है, जैसे कि प्रत्यय बता रहे हैं कि इट्स अगेन अ बेल्टर. सो उसको लेकर के एक कमेंट है कि क्या हमें इस वर्ल्ड कप में 300 प्लस प्लस जो स्कोर्स होंगे वो क्या हमें बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को दिखाई पड़ेंगे? इज इट गोइंग टू बी एवरी टाइम 300 प्लस स्कोर्स इन द ओडीआई वर्ल्ड कप एज वेल? प्रत्यय, जिस तरीके से हमने इंडियन पिचेस का टेम्पलेट देखा है, क्या हमें ऐसे ही बड़े बड़े मैचेस देखने को और फ्रीक्वेंटली मिलेंगे? बिल्कुल राशि, आई थिंक दैट एक समय था जब 275 या 280 रन, बहुत ज्यादा पहले भी नहीं, जस्ट गो अ डेकेड बैक या शायद इवन 2015 के वर्ल्ड कप तक 275 280 रन एक बहुत ही कंपेटिटिव स्कोर बहुत होता था और बार. मैचेस उसमें बन जाते थे, बहुत बार फंस जाते थे. बट राइट नाउ, बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ T20 cricket, because of how the white ball cricket has in general grown and flourished, thanks to all the mushrooming T20 leagues around the world, the T10s and T20s, the IPLs, BBLs, PSLs, LPL, CPL, the list is endless. Because of all that, जो डायनेमिक है वो स्कोर्स का चेंज हो चुका है. सो यू वुड perhaps feel that the 325 and 350 is the new 300, and perhaps 350 is, you have to score 400, so 400 is the new 350. अब उस राइट. तरीके की तरफ आप जा रहे हैं, तो अब आज की डेट में रन अ बॉल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं बची है. और जितने भी बैटर्स हैं, आप किसी भी स्क्वाड को उठा के देखें अगर, तो वो सब वो खिलाड़ी हैं, मोस्टली 90% of the squads are filled with players who have played a hell lot of T20 cricket around the world. So these are players who know that, how to accelerate, because how many Surya Kumar Yadav kind of innings would you see 10 years ago? I'm not saying that there weren't innings like that. There of course were, but the frequency at which they come, the frequency at which you see daddy hundreds now, राइट. 182 that Ben Stokes scored, and see the amount of double centuries that have been scored. The first one राइट. came, after the ODI format started. It came in 2010. But now, if you see, there have been a plenty scored. Four have been scored, three or four have been scored just by Rohit Sharma. So, the dynamic of cricket, the dynamic of ODI cricket has certainly changed. And 300 is going to be a power score at a lot of venues. But that if you score 300, you might as well feel that, okay, you're 20 short, you're 30 short. So I don't think that at a lot of venues, 300 is going to be even safe score. So you have to look राइट. towards maximizing your scoring opportunities, and you might as well see a lot of 300 scores. In fact, now that's the norm. So if you're not scoring 300, that is an aberration. If you're not scoring it, 300 is now the norm. राइट. राइट. चलिए, ऑस्ट्रेलिया टीम कम से कम इस बात से थोड़ी खुश होगी कि ओडीआई वर्ल्ड कप में हमें होलकर या राजकोट जैसे जो वेन्यूज है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की हालत हुई है वो डेफिनेटली इसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे. बट आज के सेशन में एक बार सोशल ट्रैकर पर बात कर लेते हैं. कौन से ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि आज की इस मैच को लेकर के वायरल हो रहे हैं? सबसे पहला ट्वीट हम देखेंगे CricTracker का. यहाँ पर स्टीव स्मिथ bags a golden duck and what a start for India and Prasidh Krishna. He dismissed Matthew shot a ball अर्लियर. और हम यहाँ देख सकते हैं स्टीव स्मिथ को डक पर वापस जाते हुए. ये ऐसा हमने बहुत ही कम देखा है, लिटरली बहुत ही कम मैं बोलूंगी, बिकॉज ही इज वन बैटर जो अपना विकेट कभी इजिली नहीं देते. इनके विकेट के पीछे बॉलर्स को बहुत तरीके की दिमाग लगाना पड़ता है. और आज हमने देखा आते ही स्टीव स्मिथ चलते चले गए, वापस से पवेलियन लौट गए, क्योंकि उनका विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ले चुके थे. दैट वाज क्वाइट अ सीन. प्रसिद्ध कृष्णा के लिए भी बहुत बड़ा विकेट होगा, क्योंकि स्टीव स्मिथ हम सभी जानते हैं कितने वैल्यूएबल प्लेयर हैं. वहीं अगर हम दूसरी ट्वीट की बात करें, श्रेयस अय्यर इज बैक विद अ बैंग. और जिस तरीके से उन्होंने वापसी करी है, मैग्निफिसेंट सेंचुरी फॉर द क्रिकेट सेंसेशन. बहुत ही सही समय पर उनकी सेंचुरी आई है, जिस समय सभी लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे क्या श्रेयस अय्यर आएंगे तो उनको किधर फिट करेंगे, और उन्होंने सबका जवाब दे दिया कि मैं जहां हूं मैं उधर ही फिट हूंगा और कहीं फिट नहीं हूंगा. सो डेफिनेटली उन्होंने ओन किया है, आज अपना जो जगह थी उसको कंप्लीटली फिक्स किया है, और जो क्वेश्चंस थे उनको खत्म किया है. द सूर्य शो वी शो या उन्होंने 4 सिक्सेस लगाए सूर्य कुमार यादव ने आज. बैक टू बैक जिस तरीके से शॉट्स थे, काफी अच्छा दिन था इंडियन क्रिकेट के लिए. आई होप ऐसे दिन बने रहे और बैक टू बैक हमें देखने को मिले. बट इट्स
मैं आपसे एक छोटा सा प्रिडिक्शन लेना चाहूंगी प्रत्येक, क्योंकि हम सभी को पता है कि अब थर्ड ओडीआई में इंडिया टीम अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ लौटने वाली है। इन केस अगर वो मैच हम हार गए तो इज इट गोइंग टू बी लाइक कि ओके वी डोंट नीड सच बिग प्लेयर्स इन द टीम राइट नाउ, वी आर लाइक बैलेंस्ड इनफ, वी डोंट लेट देम गो, बिकॉज इट्स वेरी इजी बीइंग इंडियन फैंस, हम जितनी जल्दी टीम को प्रेस करते हैं उतनी ही जल्दी हम नेगेटिव भी हो जाते हैं। बट इन केस अगर हम थर्ड ओडीआई हार गए तो क्या होगा? आई थिंक यू मेड अ वेरी फेयर पॉइंट राजसी। जो इंडियन फैंस हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, क्योंकि एक भी मैच हम नहीं चाहते कि इंडिया हारे। जहां भी जाते हैं आपकी यही उम्मीद होती है कि टीम जीतेगी, और बिल्कुल सही बात है। अगर एक भी मैच हार जाती है टीम तो सबके क्रिटिक्स और वो सब शुरू हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स इंडियन क्रिकेटर होना कभी भी ईजी नहीं रहा है, ना कभी पहले रहा है, और जब से सोशल मीडिया का एडवेंट हुआ है तब से तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर हार जाते हैं तो देखिए डेफिनेटली इट वुड बी अ सेटबैक, क्योंकि यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि आपके जब बड़े खिलाड़ी लौटते हैं, जब आपके छोटे खिलाड़ियों ने, हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी छोटे खिलाड़ी थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी आपकी वर्ल्ड कप 11 के हिस्से भी हैं यहाँ पे जो खेल रहे हैं, और वो भी आप लेके जाने वाले हैं उनको टीम में। लेकिन हाँ, आप आज बुमराह नहीं खेले, सिराज नहीं खेले, रोहित कोहली बाहर बैठे हुए हैं, पांड्या कुलदीप नहीं है, तो बहुत सारे खिलाड़ी बाहर भी हैं। तो ऑफकोर्स व्हेन दे कम बैक एक्सपेक्टेशंस यही होंगे कि इंडिया और ज्यादा अच्छा खेले, क्योंकि अभी तक के दोनों मैचेस में बहुत हद तक एक अगर एस्पेक्ट हम हटा दें शायद फील्डिंग का, क्योंकि पहले मैचेस में भी बहुत सारे लैप्सेस थे, विकेट कीपिंग में भी केएल राहुल की, और आज भी 2 कैचेस जो इंडिया ने ड्रॉप किए हेजलवुड के, शार्दुल ठाकुर और ऋतुराज गायकवाड़ ने, वो एक इशू है जो आप नहीं चाहेंगे इस मोमेंट पे वर्ल्ड कप के इतने नजदीक। एक ऐसी साइड जो कि जानी जाती है अपनी फील्डिंग के लिए पिछले कुछ सालों में, वो अगर फील्डिंग अचानक से खराब होती है तो एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। बट अगर उसके अलावा आप देखें तो चाहे बॉलिंग की आप बात करें या फील्डिंग या बैटिंग की आप बात करें, दोनों ही डिपार्टमेंट्स पे इंडिया बहुत बहुत कन्विंसिंग रहा है। पिछले मैच में शार्दुल ठाकुर थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट अपार्ट फ्रॉम द माइनर पॉइंट्स अगर आप देखें, ओवरऑल क्रिकेट जो इंडिया ने खेला है इन दोनों मैचेस में बहुत बहुत ज्यादा वो सराहनीय रहा है ओवरऑल। अगले मैच में ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यही है कि जीतना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े खिलाड़ी लौट के आ रहे हैं। लेकिन हारेंगे भी तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई पैनिक बटन प्रेस करने की नीड वहां पे होगी, इसलिए क्योंकि देखिए सीरीज आपने एनीवे अपनी मुट्ठी में कर लिया आज जीत के। और वो गेम ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ प्रैक्टिस गेम ओनली, बिकॉज इफ यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, नो मैटर विच गेम यू प्ले, यू वांट टू विन इट, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी गेम लाइटली, बिकॉज बहुत लोग चाहते हैं ये करना, लेकिन सिर्फ 11 को मौका मिलता है करने का। तो ऑफ कोर्स नो गेम इज सपोज्ड टू बी टेकन लाइटली, but I still think that India would be very very confident how they have managed right from the Asia Cup। वो एक पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था जो वॉश आउट हुआ, जहाँ पे थोड़े से सवालिया निशान थे कि किस तरीके की बैटिंग हुई, क्योंकि 266 रन ही थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरी की पूरी एशिया कप की कैंपेन अगर आप देख लें, और बांग्लादेश का गेम आई वांट टू काउंट इट, बट अगेन विद अ कैवियट दैट वहाँ पे बहुत सारे आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स अगेन वर रेस्टेड। बट इफ यू लुक एट द फाइनल, द विक्ट्री दैट इंडिया मैनेज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, another victory that they had in the league in the Super Fours against Sri Lanka, or the 2 games against Australia, ये जो एक पूरा एक रन बना है अभी तक का प्री वर्ल्ड कप, that has been very very satisfying and most of the boxes have been ticked। so बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको मोस्टली सबके आंसर्स अब मिल चुके हैं, और जिनके रन्स नहीं बनने थे या जिनको कि आपने अय्यर की बात करी खासतौर पे, वो एक बहुत बड़ा था, आज वो बॉक्स भी टिक हो चुका है। तो इफ यू आर इन द इंडियन डगआउट राइट नाउ, you would be breathing easy and you would be just focusing to express yourself in the next game without worrying too much about the result। Just go and play good cricket, and if you do that, of course you're going to win just like you did today। but I don't think that India would be panicking too much about the next game even if they lose। राइट राइट, इंडिया के बॉक्सेस तो टिक हो गए हैं, बट डेफिनेटली जिनके बॉक्सेस पहले से टिक थे वो अनटिक हो गए होंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया में आकर के जब उन्होंने ये 2 ओडीआईस खेले तो बहुत सारे सवाल निशान उनके स्क्वाड के ऊपर भी हैं, बट डेफिनेटली वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने इंडिया में नहीं खेला है, तो उनको भी काफी तरह का एक्सपीरियंस मिला होगा। एंड आई एम श्योर थर्ड ओडीआई में एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ उतरेंगे, क्योंकि ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, और वर्ल्ड कप के लिए उनको प्रिपेयर होना है, इस माइंडसेट से उतरेंगे। बट फिलहाल इस सेशन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम लोग फिर से थर्ड ओडीआई में लौटेंगे और बात करेंगे मुकाबले के बारे में। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यय और आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए। हम लोग दोबारा से आएंगे थर्ड ओडीआई में और बात करेंगे राजकोट की आपकी बार। तब तक देखने के लिए क्रिक ट्रैकर बहुत बहुत शुक्रिया।